Thank you, His Excellency Dr. Ashebir Walde Gorgeous Gayo. I now move to His Excellency Mr. Amos Mesondo, Chairperson of the National Council of Provinces, South Africa. Thank you very much, and greetings to all the participants, the Program Director, Speaker of the Lok Sabha, Honorable Bila, President of the Interparliamentary Union, His Excellency Duarte Pacheco, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me, Program Director, to express an appreciation for the opportunity to make an input during this important pre-summit day debate on the topic of lifestyle for environment. Consistent with the butterfly effect, it is true that environmental degradation and climate change are a global phenomenon where action in one part of the world impacts ecosystems and populations across the globe. As such, and most significantly, changing individual and community behavior alone can make a significant dent in an environmental and climate crisis. It is thus appropriate to commend the leadership of India for placing the concept of lifestyle for environment on the global agenda since 2021. Program Director, many parts of the world, including the African continent, are undergoing unprecedented environmental and climate transition. In fact, experts have observed that Africa is affected quite significantly due to the industrialization and development of the wealthy nations of the world. Despite contributing less than 5% of global carbon emissions, the continent bears the brunt of climate change. To address the challenge of climate change, Africa seeks through Agenda 2063 to prioritize adaptation in all actions. It aims to do so by drawing upon skills of diverse disciplines with adequate support in the form of affordable technology development and transfer, capacity building, financial and technical resources to ensure implementation of actions for the survival of the most vulnerable populations and for sustainable development and shared prosperity. In addition, Africa is committed to participate in the global efforts for climate change mitigation that supports and broadens the policy space for sustainable development on the continent. From a South African standpoint, climate change is already having a significant impact with marked temperature and rainfall variations and rising sea levels. We acknowledge that climate change has the potential. और आइए अब सीधा रुख करते हैं कौशल विकास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसमें शिरकत कर रहे हैं, उनका संबोधन होने वाला है। सीधा रुख करते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है, पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। हाल में G20 समिट में ग्लोबल स्किल मैपिंग को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इससे आप जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बेहतर अवसर बनेंगे। देश और दुनिया में बन रहे किसी भी मौके को हमें गंवाना नहीं है। भारत सरकार आपके साथ, आपकी हर जरूरत में आपके साथ है। हमारे यहां पहले की सरकारों में स्किल पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। हमारी सरकार ने स्किल का महत्व समझा और इसके लिए अलग से स्किल मंत्रालय बनाया।
स्किल मंत्रालय के लिए अलग बजट दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगी और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथियों, आप भी जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि एक काम सीख गए तो बस जीवन भर उससे काम चल जाएगा। अब स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग ये पैटर्न है जिसे हम सभी को फॉलो करना ही होगा। डिमांड तेजी से बदल रही है, नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारी स्किल्स को भी हमें अपग्रेड करते रहना होगा। इसलिए इंडस्ट्री, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों का समय के अनुरूप होना बहुत आवश्यक है। किस स्किल में नयापन आ गया है, किसकी कितनी जरूरत है, पहले इस पर भी फोकस बहुत कम था। अब ये स्थिति भी बदली जा रही है। बीते 9 वर्षों में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। इससे देश में आईटीआई की 4 लाख से अधिक नई सीटें जुड़ी है। इस संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मकसद ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही इनमें एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, भारत में स्किल डेवलपमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी सर्विस इतने तक ही सीमित नहीं है। अब जैसे महिलाओं से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे विश्वकर्मा साथी हैं। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता। लेकिन परंपरागत रूप से अपने बड़ों से जो काम ये सीखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना से इनके इस परंपरागत कौशल को आधुनिक टेक्नोलॉजी और टूल से जोड़ा जा रहा है। मेरे युवा साथियों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, आप जैसे युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत में रोजगार निर्माण एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत में बेरोजगारी दर अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में ही बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। इसका अर्थ ये कि विकास का लाभ गांव और शहर दोनों ही जगहों पर
बराबर पहुंच रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि गांव और शहर दोनों ही जगहों पर नए अवसर भी समान रूप से बढ़ रहे हैं। इस सर्वे की एक और बहुत प्रमुख बात है। सर्वे में सामने आया है कि भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भारत में बीते वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अभियान चलाए गए हैं, ये उनका प्रभाव है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईएमएफ ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं, वो भी आप सभी युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। आईएमएफ ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। आपको याद होगा, मैंने भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की गारंटी दी है। आईएमएफ को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत अगले 3-4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। यानी आपके लिए नए अवसर बनेंगे, आपको रोजगार स्वरोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, आपके सामने अवसर ही अवसर है। हमें भारत को दुनिया में स्किल्ड मैन पावर का भी सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाना है। हमें दुनिया को स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशन देने हैं। सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का ये सिलसिला चलता रहे। आपको जीवन में हर कदम पर सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। So that was the Prime Minister and green businesses, addressing including the small Kaushal and Dishan medium-sized enterprises. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the G20 Parliamentary Forum provides a unique opportunity for us to share best practices, exchange ideas, and develop strategies that can be implemented globally. As delegates, we must take advantage of the opportunity given to us to strengthen international partnership and forge a united front against environmental degradation. The LIFE initiative encourages us to reflect on our personal choices, recognizing that small actions can have significant impacts. Whether it is reducing single-use plastics, supporting green initiatives, or advocating for clean energy, every effort contributes to the broader goal of creating a more sustainable world. We must show the way and lead by example by adopting sustainable practices in our own lives and inspiring our people to do the same. I personally and firmly believe that the G20 Parliamentary Forum on Life is a call for action. It is a call for legislative innovation, educational empowerment, and international collaboration. It is a call for each of us to embrace a lifestyle that nurtures rather than exploits our environment. Together, let us commit to building a future where our choices reflect a profound respect for the delicate balance of nature and ensure a vibrant and sustainable life for generations to come. Thank you very much for your attention. Thank you, His Excellency Mr. Surajdev Phokir, the Speaker of the National Assembly of Mauritius,
May I now request Mr. Fadli Zon, Member of Parliament of Indonesia, to give us his perspective. Excellency Speaker of Lok Sabha, Excellency President of the IPU, Excellency Speakers of the Parliament of the G20 countries, Honorable Members of Parliaments of the G20 countries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Namaste. It is an honor to join the discussion on life campaign under India's G20 presidency. And as we are concerned about the natural disasters that have caused significant impacts to our environment, let us not forget about the man-made disasters, which also caused severe impacts to our humanity and hampered our global goals 2030 for achieving a sustainable and inclusive world for all, as we all dream about. Because there will be no world peace until everyone is living in a peace, and that is in Palestine. What happened today in Palestine is the result of the silence of international community and the United Nations, coupled with the constant oppression by Israel. To this end, the world must end double standards and hypocrisy in assessing the conflicts in Palestine. And it's shame to see that in other parts of the world, those who fight for freedoms in their own lands are called freedom fighters, while in Palestine they are fighting for their lands and justice, but the world labels as terrorists. The world must urge Israel to end its occupation and blockade, worsening today as they cut electricity, water, food, and all critical access to the people in Palestine, especially those who depend on electricity in the hospital, the babies at the incubator, and many others. This is indeed a crime against humanity and must be stopped. In this regard, safe humanitarian access must be prioritized urgently and without any delay. Distinguished delegates, regarding the discussion on environment, the House of Representatives of the Republic of Indonesia has enacted law on environmental protection and management, which becomes the foundation for managing our environment. As the largest archipelagic country in the world, Indonesia is proud to have abundance of all natural resources at both our land and sea. Our constitution mandated that all these potentials are meant for improving people's lives and welfare. All efforts must be in line with the commitments to safeguard natural resources, and most importantly, it must be socially inclusive. We also continue to promote a green economy-based development in all national efforts to achieve SDGs. To accelerate the energy transition, Indonesia is already phasing out fossil fuel subsidies and piloting carbon markets. While in terms of the legislation, the House is currently on the deliberation of the new and renewable energy bills as one of the national legislation priorities. I also want to reiterate that commitments to multilateralism and international cooperation is critical to foster sustainable use of global natural resources and to mitigate environmental damage. The G20, as both major producers and consumers of energy, could act as a bridge for developing and developed countries to accelerate energy transition process and to strengthen global energy system that is just and sustainable with a global agreement. With only 7 years left to meet the SDGs targets, let us strengthen our efforts on the protection of our planet through an enhanced cooperation and stronger political commitment. Thank you. Thank you, Mr. Fadli Zon. May I now move to Mrs. Tatiana Gigel, the member of the Federation Agriculture and Food Policy and Environment Management, Russia Federation. Уважаемый господин председатель, позвольте прежде всего выразить слова глубокой благодарности вам и в вашем лице правительству Индии за организацию на столь высоком уровне парламентского форума на тему «Образ жизни на благо окружающей среды». Для меня сегодня большая честь принимать участие в работе форума. Уважаемые дамы и господа, сам девиз «Одна планета, одна семья, одно будущее»
уже объединяет нас всех и обязывает принять все меры для сохранения нашего общего дома. В ежегодном докладе о глобальных рисках 2023 года, подготовленном Всемирным экономическим форумом, отмечается, что основные риски планетарного масштаба в долгосрочной перспективе связаны с климатическими и экологическими угрозами. В ближайшей перспективе половину рисков в первой десятке также составят экологические. В России опросы показывают, что на первые места среди угроз планете наши граждане ставят загрязнение окружающей среды, вырубку лесов и войны между странами и народами. Подавляющее большинство считает, что деятельность человека значительно влияет на нашу планету. Свой вклад в ее спасение люди видят в первую очередь в решении проблемы отходов. В настоящее время в России полным ходом идет реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Она началась около 5 лет назад, когда стало очевидно, что без кардинальных решений ситуация с разрастанием свалок будет только усугубляться. Цель реформы к 2030 году полностью перейти на раздельный сбор вторичных ресурсов. В связи с этим одним из приоритетов государственной политики России является внедрение экономики замкнутого цикла. У нас запускается соответствующий федеральный проект. Утверждена отраслевая программа по применению вторичных ресурсов в сфере строительства. При непосредственном участии сенаторов формируется необходимая законодательная база. В частности, летом этого года был принят разработанный сенаторами закон о побочных продуктах животноводства, который позволяет использовать их в качестве удобрений. Также в этом году Совет Федерации одобрил федеральный закон о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, который направлен на развитие системы раздельного сбора и увеличение доли утилизированной упаковки. Таким образом, в нашей стране создается инфраструктура, позволяющая гражданам и бизнесу формировать новые экопривычки, включаться в создание экономики замкнутого цикла. К слову, Совет Федерации также стремится жить по принципу экологичного поведения и бережного потребления. Сенаторы активно сдают отработанные вещи на вторичную переработку. В здании Совета Федерации установлены специальные контейнеры для сбора батареек, предназначенных для утилизации. Принимаются также аккумуляторы для телефонов, сотовые телефоны, электронные сигареты. В этом году в нашей палате появились автоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок. В неделю они могут принимать на утилизацию более 800 банок и бутылок, из которых будут производиться новые, более экологичные товары. Подобные фандоматы устанавливаются сегодня по всей стране, в вузах, в парках, в спортивных комплексах, общественных зонах. Мы считаем очень важным заниматься развитием отрасли обращения с отходами и инфраструктуры раздельного накопления. Чем больше будет возможностей и удобных способов для граждан направлять отходы на переработку, тем более активно они будут принимать новые экопривычки и включаться в формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране. В России быстро растет популярность экологичного туризма. Конечно, особой популярностью пользуются такие жемчужины природы, как озеро Байкал, гейзеры и заповедники Камчатки, наши национальные парки. Совет Федерации недавно одобрил федеральный закон, который позволит развивать туристическую инфраструктуру на особо охраняемых природных территориях. Граждане смогут с комфортом посещать уникальные природные комплексы, наблюдать за природой. На Байкале сейчас идет работа по преобразованию промышленного города Байкальск в центр экологического туризма. Также мы планируем опробовать на этой территории запрет на использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов. В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится соответствующий законопроект. Большинство населения России – это городские жители, поэтому мы занимаемся экологизацией городских пространств, общественного транспорта. Совет Федерации принял активное участие в разработке и внедрении нового механизма финансирования развития общественного транспорта на основе концессионных соглашений. Именно благодаря заключению такого концессионного соглашения и при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко была запущена модернизация трамвайной сети и закупка новых трамваев в городе Таганрог. В работе по экологизации включаются и наши крупные компании. Например, компания «Российские железные дороги» постоянно обновляет подвижной состав.
Вокруг и внутри Москвы появились современные диаметры с удобными поездами и станциями. Эта работа также имеет экологическую составляющую. Люди с удовольствием пересаживаются на такой транспорт, что снижает выбросы от автомобилей. В России растет количество экологических проектов с участием добровольцев. В этом году уже 10-й сезон проводится акция «Вода России». За время ее проведения по всей стране с берегов наших рек и озер были вывезены миллионы мешков мусора. В Ростовской области только в прошлом году было расчищено 110 километров береговой линии. По всей стране и за рубежом проходит инициированная нашей страной акция «Сад памяти», посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках которой ежегодно высаживается 27 миллионов деревьев. Мы наблюдаем взрывной рост молодежных экологических проектов в нашей стране. В прошлом году было создано российское движение детей и молодежи «Движение первых». В числе направлений его работы – образование и знания, волонтерство и добровольчество, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Все они направлены на создание общества, бережно относящегося к богатствам природы, живущего в гармонии с ней. При участии Совета Федерации возникли всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-дошколята», «Эколята. Молодые защитники природы». Например, проект «Эколята-дошколята» является первым этапом общего процесса формирования экологической культуры ребенка. Последующие ступени экологического образования и воспитания реализуются в рамках проектов «Эколята» и «Молодые защитники природы». С 2019 года по инициативе Совета Федерации по всей стране проводится экологический диктант. Проект направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экознаний, повышение уровня экологической грамотности. За все время проведения акции было организовано более 4500 площадок в 85 регионах России. А ее диктант будет проходить с 9 по 26 ноября. Пользуясь случаем, приглашаю коллег из двадцатки, детей и взрослых из ваших стран принять в нем участие. Благодарю за внимание. Thank you, Mrs. Tatiana Gigel. I now move to Mrs. Martha Guerrero, the Member of Parliament, Senate of the Republic of Mexico. Muy buenos días, distinguidos parlamentarios, presidentes, delegados de los países del Grupo de los 20, miembros de la prensa y ciudadanía global. Nos reunimos el día de hoy en el seno de esta novena cumbre, no solo como parlamentarios de los países del Grupo de los 20, sino también como guardianes de un futuro compartido, uno que requiere nuestra acción colectiva y firme determinación. La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se erige como una nueva hoja de ruta hacia un futuro más justo, equitativo, pero sobre todo sostenible para nuestro único hogar, que es la Tierra. El tiempo apremia y los desafíos medioambientales que enfrentamos no conocen de fronteras ni de intereses nacionales. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de nuestros océanos y la degradación de nuestros suelos son problemas que afectan a cada nación, a cada persona de manera indiscriminada. Mi participación en este honorable foro pretende convertirse en un llamado hacia la imperativa necesidad de actuar con audacia, con determinación en materia del medio ambiente, pero sobre todo para cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030. La meta 13 de esta agenda
nos insta a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Esto no es simplemente un objetivo paralelo, sino una fundamental que tiene reverberaciones a través de todos los demás objetivos, desde poder erradicar la pobreza hasta garantizar una vida saludable para todas, para todos. Nuestra acción climática informa, influye, pero también habilita la realización de estas metas. Propongo que, como parlamentarios participantes del principal espacio de deliberación política y económica del mundo, intensifiquemos nuestros esfuerzos para trascender las palabras y poderlo convertir como nuestros compromisos en acciones tangibles. La inversión de tecnologías limpias, la transición hacia una economía baja en carbono, la protección de nuestros ecosistemas y la promoción de las prácticas agrícolas sostenibles deben de ser nuestras prioridades inmediatas. Además, para lograr avances significativos en nuestra lucha contra esta crisis climática, los parlamentarios necesitamos fortalecer nuestro compromiso con la financiación climática. Los países más ricos históricamente han contribuido en mayor medida a la acumulación de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Tan solo los países que integramos el grupo G20 somos responsables del 78% de esa totalidad de emisiones globales de estos gases. Por tanto, tenemos la responsabilidad moral y el imperativo ético de liderar este esfuerzo hacia la transición del planeta, hacia un futuro más verde y sobre todo más resiliente. En México estamos avanzando en el cumplimiento de estas metas. Hemos puesto en marcha acciones concretas para poder contribuir a este medio ambiente. Una de ellas es una política pública que actualmente está impulsando nuestro presidente, que se llama Sembrando Vida, que busca contribuir al bienestar social impulsando la siembra de árboles frutales y maderables, promoviendo la autosuficiencia alimentaria e influyendo en la reconstrucción del tejido social de nuestro país y la recuperación del medio ambiente a través de la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales. Se trata de rescatar el campo y reactivar la economía local de las comunidades. Hablamos del amor a la tierra. La meta es implementar 1 millón de árboles antes del 2024 y con ello poder tener la capacidad como país para poder absorber 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Por el lado del trabajo legislativo, hace tan solo 9 días atrás, en el Senado de México, aprobamos una modificación en nuestra Estrategia Nacional del Cambio Climático, en donde el Estado mexicano se compromete a reducir el 35% de sus emisiones para el 2030, en lugar del 22%, como estaba establecido antes de impulsar esta reforma. Estas acciones demuestran el compromiso decidido que en México tenemos para poder cumplir con las metas y aportar en la solución este problema que en México ya consideramos que es urgente. Como nunca en la historia de la humanidad, estamos en una encrucijada y México está consciente, donde tenemos que definir el legado que nuestra generación heredará a aquellas generaciones venideras. La elección es clara y es unívoca. Podemos ser los arquitectos de un futuro sostenible donde la prosperidad va de la mano con el respeto y el cuidado de nuestro entorno. O podemos ser los autores de un futuro definido por la crisis, de la pérdida y de la desigualdad. Esto es nuestro momento y con la mirada puesta firmemente en la realización de esta Agenda 2030,
Es nuestro deber colectivo abogar, actuar, pero sobre todo asegurar un futuro donde la sostenibilidad no sea solo una meta, sino que sea una realidad. Juntos podemos y debemos constituir ese futuro que imaginamos. Nuestros futuros hijos, amigos, familiares merecen un futuro mejor y vamos por el rescate del cambio climático. Muchísimas gracias y muchas gracias por su atención y como mexicanos nuestra más sincera felicitación a este país que inspira cultura, que inspira respeto. Muchísimas gracias, India. Thank you, Mrs. Martha Guerrero. I now move to Her Excellency, Ms. Nosivia Nolotondo Mapisa Nakwakola, Speaker of the National Assembly of South Africa. I thank you, Your Excellency, Honorable Bira, the Speaker of Lok Sabha, Your Excellency, the President of the IPU, Honorable Pacheco, the Honorable Amita Kant, Shaper of India's G20 Presidency and Moderator of the session, Honorable Speakers of National Assembly, Honorable Members of Parliament present, invited guests, ladies and gentlemen. Allow me to start by thanking and congratulate India for successfully hosting the G20 Parliamentary Speakers Summit. It does this at a very critical time when the world has enormous challenges. Your Excellencies, it will be remiss of me to make my input on the topic without touching upon the unfortunate ongoing conflict between Israel and Palestine's Gaza Strip. We note with deep sadness and pain the escalation of the conflict that is going on in that part of the world. This conflict has sadly resulted in the loss of innocent lives from both sides, in particular women and children. Your Excellencies, the conflict between Palestine and Israel, which has been going on for decades, should be understood in its historical context. We call upon the international community to assist the two countries in finding a lasting solution to the conflict instead of taking sides which lead to further escalation. There is no winner in a war situation, as we all suffer losses and casualties. The Republic of South Africa confirms its full support for the two-state solution, which will ensure that the state of Israel and Palestine live side by side peacefully as sister countries. Your Excellencies, the topic we are discussing today is of seminal importance. It is a matter of life and death, as it calls upon all of us to modify our lifestyles in whatever we do to protect and save the environment, which is our source of life. It reminds us that in all our actions, whether they are in pursuit of development and economic interest, we must do so in such a manner that we don't cause more harm to the environment. Your Excellencies, lifestyle environment is a matter of life and death because our lifestyle is a major cause and contributor to environmental degradation, which plays a major role in our inabilities to achieve the 17 Sustainable Development Goals as adopted by the UN in 2015. By its own definition, sustainable development is development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It is evident from the above definition that the international community was cognizant of the fact that
in whatever action it takes in quest for developmental goals and economic prosperity. It should be done in an action that should look at long-term and sustainable benefits instead of a short-term and unsustainable development. Sustainable living means understanding how our lifestyle choices impact the world around us and finding ways for everyone to live better and lighter. Sustainable living and lifestyles appeared for the first time in the Sustainable Development Goal 4, which is quality education, and Goal 12, which is responsible consumption and production. The need and objective to pursue sustainable living and lifestyle environment cannot be achieved by governments and parliaments alone, acting in isolation without the participation and involvement of communities and citizens. In this regard, governments have a huge obligation to bring along communities and citizens at large through consistent educational programs and effective public awareness campaigns about the importance of living a lifestyle that will protect and safeguard our environment for sustainable living. We also need to partner with civil society organizations in order to achieve this. In rural areas, we need to work closely with community leaders such as traditional leadership, religious leadership, and formations to educate our communities about the importance of lifestyle environment. The effects of global warming, climate change are a danger to all of us, and this is what our people need to understand. Your Excellencies, another important intervention is not the most important, if not the most important intervention that we must embark upon, is to ensure food security for the developing countries and vulnerable. Food security is a matter of life and death in the developing countries and the downtrodden. Whatever interventions that we put forward in quest of lifestyle environment will never make sense to the poorest of the poor who are in perpetual struggle to get food to survive if we don't make their lives better. The poorest of the poor have no luxury to make food choices and to pursue a lifestyle that will save the environment. Their goal is to get whatever they can in order to survive that particular day. For them, the issue of lifestyle environment is far from realities and daily survival struggles they are confronted with. On the basis of the above, I wish to submit that our quest for lifestyle environment cannot succeed unless we put intervention measures to assist the poorest of the poor in the developing world. Your Excellencies, one of the major contributors to environmental degradation is the use of fossil fuels instead of using renewable energy. However, change from fossil fuels to renewable energy is out of reach for developing nations. In this regard, the above-mentioned change can only be achievable for developing nations through support by the developed countries. In the same wavelength, the mode of transport that many developing worlds use also contributes immensely to the emissions. There's been suggestion that the solution to this challenge is to use electric cars and non-motorized cars. This is another tall order for the developing nations. Many developing countries do not have sufficient electricity to cater for daily needs, let alone financial muscle to purchase or manufacture those electric cars. In addition to the above, non-motorized cars might not be able to access and reach deep underdeveloped rural areas. In this instance, in order to change, the developing nations will need the sustainable financial support from those of us who are developed nations. Excellencies, the achievement of the Sustainable Development Goals is interlinked to our commitment to lifestyle environment. However, our commitment and practical change to lifestyle environment cannot be attainable without adequate financial support
to the developing world. I thank you. Thank you, Madam Speaker. I move to Dr. Fadli Zon, the Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of Indonesia. I did already deliver my. Thank you. So thank you very much. We've got inputs from a vast number of very distinguished speakers and leaders. I thank you all for your valuable and insightful comment, and I greatly appreciate the inputs received. I would now invite Shri Harivansh, the Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, to deliver the concluding remarks. Honorable Speaker Lok Sabha Sri Om Birla Ji, Honorable Duarte Pacheco, President IPU, Honorable Presiding Officers of Parliaments of G20 countries, Honorable Members of Parliament of G20 countries, G20 Sherpa Sri Amitabh Kant Ji, Secretary Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Srimati Leena Nandan Ji. Distinguished participants and guests, Namaste. We have come to the conclusion of an engaging discussion on the idea of lifestyle for environment. It was my privilege to be part of the interactions that began with the wise words of Sri Om Birla Ji, Honorable Speaker Lok Sabha. His words highlighted the need for environmentally conscious lifestyles in the wake of climate change. I thank all the distinguished presiding officers who spoke for their valuable insights and adding unique perspectives on this subject. I also thank Mr. Amitabh Kant, the Sherpa G20, for introducing the topic of today's discussion and putting it in right perspective. I would also like to extend my appreciation to Mrs. Leena Nandan, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for her interesting presentation on life and the short film, which showcased that climate action will have to be taken up with greater urgency by the parliaments, governments, business, civil society, and by the citizens. Excellencies, the concept of lifestyle for the environment was first introduced by India at COP26 in Glasgow in 2021, calling upon the global community to make life an international mass movement towards, I quote, mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption, unquote, of our natural resources. Allow me to remind, Excellencies, that this is exactly what our father of nation, Mahatma Gandhi, had warned us a long time ago through his famous words, and I quote Mahatma Gandhi, "The earth has enough resources for our need, but not for our greed." These words ring true today, where we find the world battling with the adverse implications of the climate change and environmental degradation. Excellencies, Mission Life seeks to channel the efforts of individuals and communities into a global mass movement of positive behavioral change. Mission Life is a very significant step in our long journey of sustainable living. India, under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made concerted efforts to combat the ill effects of climate change. In his words, I quote, Mission Life connects the powers of the people for the protection of this earth and teaches them to utilize it in a better way. Mission Life makes the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute according to his or her capacity. Mission Life believes that even small efforts can have a huge impact. Mission Life inspires us to do all that can be done in our everyday life to protect environment. Mission Life believes that the environment can be protected by changing our lifestyle, unquote. Excellencies, collectively and individually, therefore, we need to be mindful of the fact
that every small action counts and every individual matters in our fight against the challenges of the climate change. The LIFE initiative is not confined to the boundaries of any one nation. It's a global movement, reminding us that the fate of our planet is inseparably linked to the choices we make every day. Let us be the guardians of our environment and the torchbearers of a sustainable legacy and regenerative future. Together, we can turn the tide towards a world where life thrives and our planet flourishes. Excellencies, while the executive has its task cut out for combating climate change, the role of Parliament is also central to any successful strategy to tackle it. The G20 Parliamentary Forum, uniting representatives from different parliaments, holds immense potential to deepen parliamentary cooperation to address this global issue. Together, we can shape legislative frameworks that support climate mitigation and adaptation, ensuring that our nation are on the path of a sustainable future. As Honorable Speaker Lok Sabha has already said, before Indian Parliament, through both houses, has been at the forefront of articulating the climate change concerns and also examining the shaping of energy transition, energy security, and environment-friendly technology. Excellencies, in this session, I am genuinely pleased that we as representatives of respective parliaments could harness our collective wisdom to generate innovative ideas and strategies. Almost 15 speakers have articulated on this subject in this session. The President of IPU, Honorable Duarte Pacheco, underlined that Parliament must also focus on administrative reforms towards sustainable practices. Honorable speakers have highlighted unique ideas from their respective countries in protecting and preserving the environment. These include legislative protections, identifying the right balance of regulatory framework, protection to indigenous communities, changes in our education at primary level, among others. While the ideas expressed by speakers were distinct to their respective regions, these ideas firmly display the common resolve to preserve our environment through behavioral changes at an individual and community level. Excellencies, your valuable views and constructive suggestions given today will certainly go a long way to give a boost to the global movements of sustainable lifestyles and sustainable ecosystems. We also discussed and shared knowledge about individual and community level actions and global best practices that could help combat climate change. At the end, I would like to reiterate my sincere gratitude to each of you. I thank you for your enthusiastic participation and constructive approach shown here. Jai Hind. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, sir, for your inspirational remarks. Greatly appreciate your insights. This brings us to a close of this session on lifestyle for environment. I greatly appreciate all the comments and the remarks made by distinguished speakers today. I request the delegates now to join us for a lunch hosted by the Honorable Speaker at Amaltas Hall. This lunch is, you will be escorted to this lunch by your liaison officers to the venue. And I once again, on behalf of the Honorable Speaker, thank all of you for having participated so energetically and so dynamically in this session on life. And on behalf of the Speaker, I request you to kindly join him for lunch. Thank you very much, please. यशोभूमि से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। टॉपिक है लाइफ, जिस पर अलग अलग देशों के स्पीकर्स ने संबोधित किया। आपने उनको सुना। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कैसे हम चेंज करें खुद को, बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह बहुत ही सुंदर तस्वीर भी आई।
जिसे हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जब लोकसभा अध्यक्ष ने P20 संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली मेट्रो में सफर किया, आइए उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के बारे में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सबका लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में आप सब प्रतिनिधि भारत की यात्रा पे आए। भारत जो विविधता, बहुलता, विविध संस्कृति वाला देश है, मुझे लगता है इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको ये समिट नए मापदंडों को नई दिशा देने में कामयाब होगी। आज हम पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल संबंधित प्री बैठक में भाग ले रहे हैं। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है और आज प्री समिट में इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय प्रतिनिधियों का अमूल्य योगदान होगा, विचार विमर्श होगा, ऐसी मेरी आशा है। योर एक्सेलेंसीज, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। प्रकृति को आदर सम्मान देकर हमेशा हमने हमारे संस्कारों को इसी फलीभूत में हमने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति को इस दृष्टि से देखा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है और यही पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना भी है। बदलते परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। हम विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अवगत हैं, इसलिए इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की मांग है। योर एक्सेलेंसीज, पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है। आज ये विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस विचार को आधार मानकर आज अलग अलग देशों में अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार नीतियां एवं कार्य योजना भी
बनाई जा रही है। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल विषय पर भारत की संसद में भी व्यापक चर्चा हुई है। आवश्यकता होने पर कानून भी बनाए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल नीतियां एवं कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सबको अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिकता से योगदान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार 8 बिलियन वैश्विक आबादी में से यदि 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम हमारी सर्वोच्च संस्था विधायी संस्था संसदों में मिशन लाइफ स्टाइल विषय पर चर्चा करें, वहां की अपने अपने देश की जनता को एक संदेश दें ताकि देश की जनता अपने जीवन में हिस्सा मानकर एक जन आंदोलन के रूप में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपके विचार अमूल्य होंगे और हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपट पाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक नई दिशा दे पाएंगे। आप सब पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पधारने के लिए। Those were the honorable speakers' opening remarks, and now let's just listen into IPU President Duarte Pacheco's address. Dear Mr. Speaker, Mr. Deputy Chairman, Madam Speakers, Mr. Speakers of Parliament, colleagues, parliamentarians, excellencies, it's for me a great honor to represent the IPU here at the G20 Speaker Summit in India, the world largest democracy of the world. We need always to remember that in all levels, since the local through regional and finally national level, as true democracy. India is strongly represented at the IPU by the Lok Sabha and Rajya Sabha, which contribute both houses working together in a very close way with IPU to defend the values of democracy and the parliamentary diplomacy, and this way to service the people for peace and development through the promotion of democratic governance, institutions and values. Also, it shows the compromise of India with multilateralism, with parliamentary diplomacy and with democracy. So, not just inside the country, but around the world. And this is one good example that I believe others should follow. I applaud also this initiative, dear colleagues, Lifestyle for Environment Life, initiative of the Prime Minister Narendra Modi, was set forth a valuable and sustainable model of global well-being. Is a call for action, as we understood very clear during the presentation. A call for action because climate change is something that is real, it's not some theoretical. Some people are believing that it does not exist, but if they feel that, please come to Pakistan and see the floods they had, or 1 month ago in Libya. They can visit countries that have forest fires. In Greece, 1 week forest fires, on the other week floods, killing thousands of people. They can go to the islands of the Pacific, where the rise of waters will make some countries disappear very soon if we don't have action, concrete action. And so we know this is a minority, but we need to fight with them, because we should involve everyone in this call for action to save our planet. And we know that time is running out. And from now on, everything which we do should be in the favor of our planet.
From this perspective, LIFE is a relevant initiative that I believe should be replicated around the world. The G20 parliamentarians in particular have an opportunity to take the lead by example and embrace this initiative. Mahatma Gandhi rightly said, "Be the change that you wish to see in the world." We are parliamentarians. Some of you are speakers of parliament. You have the power in your hands, the power of leading us by example, but concrete power to change the society as well. So we are not just academics to talk about the issue. We may talk, but we need to take decisions, concrete decisions, to exchange the change that we wish to our world. And it is clear that climate action must begin at home. Also inside our parliaments, where we can reduce a lot of costs. For instance, reduce the carbon footprinting institutions, and in a particular point of view, we can also use greener energy inside our homes. We can save by new technologies, try to avoid the waste of paper. So inside our own parliaments, we may lead by example, because it's very difficult to express to society to do it, and we don't do at home. We should lead by example. And the Parliament of India and IPU have various other shared aims and values, such as unity and in diversity, empowering women and acknowledging the power of youth. Above all, both the IPU and India strongly believe in multilateral parliamentary diplomacy to ensure that countries work together to address common issues and challenges. We saw that you have a title for this meeting, One Earth, One Family, One Future. And this is something that we should always put in practice. I believe that the pandemic showed to all of us how small is our world. A small virus that is impossible to see with our own eyes, one day appear somewhere in Asia, and just in a few weeks affect all of us, all countries, North and South, rich and poor, all continents, in America, in Europe, in Asia, in Africa, because we are a small world. And if you are a small world, we should work as a family to fight against all the problems of humankind. Recently, the 9th IPU Global Conference of Young Parliamentarians took place in Hanoi, Vietnam, with near 3 young parliamentarians from more than 70 countries. And they assumed a commitment to accelerating the achievement of Sustainable Development Goals, especially through digital transformation and innovation. Young MPs represent the voice of a vibrant generation, passionate about making a difference in societies and contributing to the achievement of SDGs. India, with the world's largest adolescent and youth population, is in a particularly strong position to harness the power of digitalization and technology, demonstrating their ability to break barriers and connect people worldwide. At this crucial time, when the world is witnessing the impact of climate crisis everywhere, we need to start a renewable revolution without delay. I would like to show our support to the Indian Parliament ideal, Sabka Saath, Sabka Vikas, or Sabka Vishwas, meaning, forgive me my language, but meaning together with all, development for all, and trust for all. The IP looks forward to working with India and with all its members in driving this agenda and forward and committing to the LIFE initiative to give a new lease of life to climate action. Call for action, not tomorrow, today. Thank you for your attention. इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट को आप सुन रहे थे, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है P20 समिट में। और इस समिट से पहले वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में सचिव लीना नंदन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Excellencies, this was just a snapshot of the actions that we can promote, whether we are part of governments or corporates or in our communities,
in our individual families. And taking this theme forward, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change adopted a whole of government approach in the run-up to the World Environment Day this year. We did a month-long mass mobilization campaign. And this mass mobilization campaign saw tremendous amount of participation from all parts of the country, and indeed from countries abroad where coastal cleaning exercises were also undertaken. 1.6 million events across the country led to 26 million individuals participating in events and 24 million pledges that were taken. This is just an indication of how, once we have a call to action at a mass level in our countries and across the world, there can be significant outcomes by all our collective actions. The alignment of lifestyle for environment with the global call to action has been taken forward in so many forums, and the cover decision at the COP27 last year noted the importance of transition to sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production for efforts to address climate change. The ministry has continued its efforts to highlight this importance, and the G7 communique adopted in Japan early this year took note of the IPCC report, which pointed out that global GHG emissions can be reduced by 40 to 70% through behavior and lifestyle changes. And taking note of this report, the G7 established the platform for net zero and well-being in life to incentivize sustainable consumer choices and preferences. We flagged the importance of lifestyle for environment in our discussions during the presidency of the Shanghai Cooperation Organization, and we are happy to report, Excellencies, that the communique also pointed out that there's a need to transition to sustainable lifestyles and sustainable consumption and production patterns, and the need to actually incorporate this in education so that lifestyle changes and models of development and sustainability can be encouraged and fostered across the world. Coming to the G20 discussions and deliberations, this was a very key theme across the G20 meetings, and it culminated in the adoption of high-level principles on lifestyles for sustainable development. And what are these principles? Just a quick overview. These principles emphasize on the interlinkages between development and climate agendas and support the effort to meet the basic needs of all people. It promotes environment-friendly individual and community behaviors. It adopts the principle for promoting sustainable production and investment in key areas, mainstreaming of sustainability in all aspects of the economy, leveraging the potential of data and technology for adoption of sustainable consumption and production patterns. It recognizes the role of local communities, local and regional governments, and traditional knowledge. It recognizes the role of financing in achieving development and climate goals. And it also points out the need to strengthen international cooperation, collective action, and partnerships. And Excellencies, the discussions also took note of the fact that across the world, countries have their various systems and responses that focus on collective and individual actions to combat climate change. And this is just to take note of a few of these initiatives as are undoubtedly taking place in different countries. But today the need is to focus on them, to mainstream life actions in our policy and our interventions. So whether we talk about the Beat the Peak campaign, let's take care of our resources, let's take care of our country campaign, the Furoshiki wrapping cloth tradition, the Lagom philosophy of just right, the milpa farming, this is just a few, to name a few of those practices that are being practiced in different countries of the world. And today, what our request is and what our focus is on, that we should try and highlight and mainstream lifestyle actions in every sphere, in every sector. So the New Delhi Leaders' Declaration has actually taken forward lifestyle for environment, and the countries have committed to robust collective actions that will enable the world to embrace sustainable production and consumption patterns and mainstream lifestyles for sustainable development. To this end, the G countries committed to implement the G20
high-level principle lifestyles for sustainable development. They supported the implementation of the cooperation, financial support and development, deployment and dissemination of technology, and encouraged international organizations to incorporate HLPs into their program. And the G20 Leaders Declaration also noted the launch of Travel for Life and supported the development of smart destinations that are responsible and sustainable. Excellencies and delegates, I am very happy to report that on the World Tourism Day of 27 September this year, the Travel for Life was launched at a global level, and India took the lead in promoting this concept of developing sustainability in all sectors of travel and tourism, in the sectors of hospitality, travel trade, and to encourage consumers to adopt environment-friendly and lifestyle-based behaviors. These mindful actions undoubtedly will result in the conservation of the environment and biodiversity. They will make a big contribution to the local economy and encourage the communities that are practicing healthy and traditional lifestyles. And they will preserve the socio-cultural integrity of the destinations. The way forward, as we see it, is to actually bring together the different elements of the value chain, the behavioral nudges where there can be a change in the demand. And this choice, the change in choice, can lead in turn to this change in the demand. And that would then actually incentivize the change in the product in terms of the design, in terms of the product, in terms of the processes, and overall encompassing the umbrella framework of sustainability as a part of policy measures undertaken by governments. When sustainability gets embedded in all sectors, where green investments are incentivized, that's how we will be able to mobilize resources, channelize resources and investments in the right directions. And for this, the regulatory and legal frameworks would have to work in tandem so that when we complete this virtuous circle of change in choice and demand and supply, and we take it up under the umbrella of change in policy, then ultimately that would lead us to the difference that the world needs us to do today as guardians of the planet, as trustees of the planet for future generations. Thank you, Excellencies, and I'm really grateful for this opportunity to present the principles of lifestyle to this august gathering. Thank you once again. P20 की पहले दिन की चर्चा काफ़ी अहम और लाइफ पर जो बातचीत हुई है उस पर हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित तौर से देखा जाए तो पूरे विश्व की बात इस वक्त भारत कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, शैली केडिया हैं, ये सीनियर फेलो हैं टेरी से। शैली, बहुत बहुत आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, आप सुन रही हैं पूरा जो समिट है वो चल रहा है और इस समिट के दौरान अलग अलग देशों के स्पीकर्स ने अपनी बात कही, लेकिन हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की, जिसकी शुरुआत मैं कह सकती हूँ कि भारत जिसको लीड कर रहा है, जिस सब्जेक्ट को, उस पर आज पूरा विश्व चर्चा कर रहा है। पहला रिएक्शन आपका इस पर। धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे इनविटेशन देने के लिए। तो मेरा पहला रिएक्शन यही है कि एक तो आईपीसीसी की बात हुई, अभी हमने सुना। आईपीसीसी हमें बहुत टाइम से बता रहा है कि लाइफस्टाइल चेंज या जो हम पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की जो बात करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। और आज के दिन हम ये लाइफ सिर्फ मिटिगेशन नहीं, अडेप्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं। तो लेकिन किसी भी देश ने आगे बढ़ के एक जीवन शैली को इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन हाँ, ये कदम भारत ने लिया, COP26 में लिया, ग्लासगो में जो क्लाइमेट महासम्मेलन हुआ था 2021 में, और फिर उसके बाद पिछले साल ही उन्होंने बड़े स्तर पर मिशन लाइफ अडॉप्ट किया और उसको एक अपने G20 प्रेसिडेंसी का काफ़ी बड़ा थीम बनाया। और इस तरीके से भारत लाइफ को इंटरनेशनलाइज कर रहा है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और
P20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है ताकि कि सांसद मोबिलाइज हो सके और ये जो पर्टिकुलर थीम है लाइफ उसको फर्दर डेमोक्रेटाइज कर सके ताकि कि ये सच में एक राइट्स बेस्ड मूवमेंट बन सके और लोगों तक पहुंच सके और सही कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक पहुंच सके, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स हो. But the message that the Lok Sabha Speaker was trying to give through this parliamentary forum on life was that environment and climate change are related to our mutual future, and those who respect nature will be the ones who will perform. So the fact that India's approach towards life and the G20 presidency taking place, how do you see that actually converging and giving a realistic shape to the kind of movement that India wants to begin, not just within the country but globally on sustainable lifestyles? Yes, ये बहुत ही this is a very important question. We see that in the high level principles on lifestyle for sustainable development, one of the main approaches we see from India's side is that for a global discourse, life should be seen as a bridging concept between sustainable development and climate action. And any climate action measure requires global response, requires collective action. So from that perspective, this entire norm of life was introduced to internationalize it, to mobilize global action. Yes, the focus of life is on nudging individual behavior, which was also highlighted in the speech by the Secretary of Environment, Forest and Climate Change. But however, that demand side measure should also translate into supply side measures and policy change. It is not that the entire onus is on individual and communities, but yes, they need to, like when we talk about democracy, we talk about also mass movements. And what indeed, like a better example than India to represent democracy and mass movement that finally led to the independence of India, and then India coming as the largest democracy in the world. So India hopes that when people come together, not just from India, but from across the world, this will have like a massive snowball and ripple effect to bring changes at the global level by making changes in the way business operates, in the way policy and the regulation इकोसिस्टम है. शैली, लेकिन जिस तरीके से अभी आप पूरे समिट को आप सुन रही थी, भारत ने जिसकी शुरुआत की है, देखिए कि जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने अपनी बातों को रखा. तो जो पॉलिसी मेकिंग की आप बात कर रही हैं कि केवल पॉलिसी मेकिंग से काम नहीं चलेगा, सबको साथ आने की ज़रूरत है, तो मुझे उन स्पीकर्स की बातों को सुनकर के आपको क्या लगा? पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ में खड़ा है, लेकिन जो कुछ खास अगर पॉइंट्स को अगर आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें इसे लेकर. हाँ, तो सबसे पहले एक पॉइंट ये आया है कि पहला कदम ये होगा कि पार्लियामेंट, हर देश के पार्लियामेंट ही एक रोल मॉडल बने. अभी हम अपने इंडिया के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में देखते हैं तो वो एक ग्रीन बिल्डिंग है, वो एक ग्रीहा सर्टिफाइड बिल्डिंग है. तो पहले स्टेप में एक पार्लियामेंट ही और ईच पार्लियामेंटेरियन ही सही एक रोल मॉडल बने. और फिर उसके बाद क्योंकि लाइफस्टाइल का जो एक मेन रूट है वो इंडिविजुअल एक्शन पे ओनस डालता है. बट यही है कि आज के दिन में सबसे बड़ी बात ये है कि हम सारे जो इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस शिखर सम्मेलन को अटेंड कर रहे हैं, उनसे हमने एक बहुत बड़ी विलिंगनेस देखी कि वो लाइफस्टाइल को अपने अपने देशों में उसको इंटरनलाइज करने की बात कर रहे हैं. तो वो एक बहुत बड़ा कदम है. डेफिनेटली पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट, नीतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इंडिविजुअल एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वो दूसरा चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इंडस्ट्री और बिजनेस का बिहेवियर चेंज होना. Absolutely, you're right. So not just policies, but a whole of society approach is required to bring about this kind of change that we want to see. So through forums like these, when we discuss and deliberate at a global level, how pivotal role do you see these events playing in increasing awareness, in achieving the overarching objectives of movements like LIFE that India has started?
Yes, I definitely think that these kind of events in what international relations is called a constructivist role, a socialization role. There are new ideas that are brought together in these events, and in this case, India is basically advocating for mission life, and all these parliamentarians who are attending this event, they will be taking back this message back home, which will then translate into policies and hopefully eventually into real actions on the ground, not just in terms of individual behavior change, but also the way in which markets operate, which is the supply side, and the kind of products and services that they bring into the market. So that systemic level change, the whole of the society change, or what we call as systemic approaches, is very important. Right. We also have two guests joining us virtually. Mr. Ashish Kumar, co-chair Life, Resilience and Values for Wellbeing India, and Ms. Ruby Pavankar, executive director and past president, Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology. Mr. Ashish Kumar, if I may come to you first and get your perspective on the Parliamentary Forum on Life that took place this morning, wherein we heard deliberations from all of the presiding officers taking part in the summit. To begin with, the Lok Sabha Speaker highlighted how environment, climate change are related to our mutual future, and therefore the world needs to progress towards taking care of both of these. Do you see the kind of agenda that India set at the G20, the P20 now taking it forward in terms of translating them into some kind of tangible outcomes? Please unmute yourself. Thank you. Yes, I think you very important point has been made. And during the G20, the lifestyle has been the main issue, not only for the purpose of consumption, but also production. And what is needed is the change in the lifestyle. That is what the Prime Minister has been saying, and that is what the delegates and the declaration has come out, Right. is that to reduce reuse and recycle, reuse these products and recycle these products, and improve the consumption pattern, which is more climate friendly, more environmental friendly. But equally important thing is the production. The production is a major issue which has to be taken care of when we are looking at the total change in the lifestyle, the kind of products we are using, and how we are using it, how the waste is disposed of, how the waste is recycled, how waste is disposed of. Now the question is the production cycles are tuned to improve the lifestyle in terms of its environment. One of the major carbon emissions which are taking place is through energy production. Energy production itself is a major source of carbon emissions, and therefore the effort has to be to move towards more renewable energy systems. India has already been following up the International Solar Alliance, which has made a lot of improvement in terms of using the renewable energy. A lot of countries have already signed for it, and they have been doing it. And this new declaration, they have come out with a voluntary high-level principles for biofuel, which is a very important area where biofuel use has to be increased. Another important thing which has been said is about hydrogen, how the hydrogen has to be produced, traded, utilized, and they have come out with a high-level voluntary principles on use of hydrogen. These are some of the areas on which practical work is being done, and India is taking lead in all these activities. And I'm sure the Biofuel Alliance
major countries have already signed in, and others will be joining shortly. Therefore, there will be a lot of improvement in terms of conservation of environment, having its impact on the climate, which will definitely be related to the kind of lifestyle changes which are required. Absolutely. Before we go across to Ms. Ruby, Shaili, I would like to come to you in a related question on the Global Biofuels Alliance. That was a huge announcement on the sidelines of the G20 summit, especially in the context of developing countries where there is need for energy transition and sustainable, because there are issues of financing, there are issues of technology transfer, there are issues of infrastructure. How do we ensure that the developing world is also brought in together into this kind of alliance, so that this kind of green transition we are talking about happens at the pace at which it is required? Yes, definitely the Global Biofuel Alliance is a very important announcement, and that also comes in the context when, you know, there is a very, very volatile situation across the world when we talk about conflicts which impacts energy security. And when we talk about biofuels, you know, they also contribute to energy security at all levels, you know, whether it is through blended ethanol use. So it is definitely a very, very important alliance. And we do see a lot of action on the ground. Firstly, there was a debate of food versus fuel. Now that is taken care of, as we are talking about different feedstock that will go into these biofuels. So I would say that the technology development as well as the awareness is there, so that, you know, these trade-offs are taken care of when we are talking about fuel versus food debate. And we do see that developing countries specifically need to step in here because biofuels does present with an opportunity. But one of the other ways to rope in developing countries together is that India really leads this, not just in terms of policy advocacy, but in terms of research and development and sharing of best practices as to where biofuels is used in the both supply side as well as the demand side. बिल्कुल, मतलब बात वही आ गई कि अगर हम बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं तो रीयूज़, रीसाइकिल, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में कई बार किया है। रूबी, मैं आपको जोड़ना चाहूँगी चर्चा में। मेरा सवाल आपसे, बात बहुत छोटी है लेकिन देखिए इसे समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम छोटी बातों पर ध्यान दें तो हम बहुत बड़े स्तर पर हमें सफलता मिल सकती है। एसी के टेम्परेचर की बात की, हम अगर जिम जा रहे हैं तो बेटर है कि हम कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कैसे इसे अपनी डेली लाइफ में लाया जाए, जिस पर इतने बड़े सत्र में चर्चा हो रही है, पूरा विश्व एक साथ एक मंच पर दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? Ruby, unmute कीजिए जी। Thank you, Ji. This is a very important question. The most important thing is that we have to, हमें civil society को involve करना बहुत ही important है. And as it was also said in the G20, it's not only the importance of policymakers and governments, but you have to engage international societies, international organizations, scientific community, and also the civil society. And that is a very important point or aspect that the G20 India presidency has had during the T20. This time in the T20, there are multiple task force. I myself co-chair the task force 3 on life, wellness, resilience, and ethics and values. And I think these actually engages people and gets more exposure and more involvement of multiple people from different capacities, like urban planners, architects, not just economists, but also scientists, public health experts like myself. And this is absolutely crucial when we try to implement it. And जो आप बता रहे हैं कि that moving away from the more developed kind of lifestyle to a more simplistic lifestyle, I think these are small steps. Like many places, जैसे Japan, maybe there is increased now introduction of electric vehicles, hybrid cars, as against the more motorized cars. So this kind of changes are very important.
And as Shaili also mentioned, it is very important that this has to be with involvement of developing countries. Developing countries, they do not have the resources for doing this. So that's where the role of the global community is very important. जो अपने resources developing countries से share करें. And this is an important commitment that is also highlighted in India's G20 presidency on how the developed countries should share their resources with the developing countries. Or in fact, uska to that has received universal approval by everybody. Now is the time for action. जी, एक शॉर्ट रिएक्शन आशीष जी, मैं इस पर आपका लेना चाहूंगी। मैंने सवाल इनसे किया है कि बहुत बात छोटी है, लेकिन देखिए इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो जिस पर चर्चा करने के लिए आज पूरा वर्ल्ड एक साथ एक मंच पर है, उसे बहुत आसान बनाया जा सकता है। Can you repeat it, please? आशीष। हाँ जी। Mr. Ashish Kumar, can you hear us? Okay, yes, I can. Please unmute yourself, sir. Yeah. ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में जब तक अपने रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक इसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ज़रूरत ये है कि हम लाइफ साइकिल चेंजेस करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें और इन सारी चीज़ों के मैसेजेस, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का बहुत बड़ा काम है, जो कि अभी रूबी जी कह रही थी कि NGOs को साथ में लाएं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लाएं और उनके थ्रू एक मैसेजिंग हो, और जो खुद प्रैक्टिस करें और उनके साथ जो कांटेक्ट में आते हैं लोग उनको पहुंचाएं और उनको आदत में डालें, उनको समझाएं कि कैसे ये हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी लेवल पे भी चेंज करने पड़ेंगे और कुछ नजिंग और कुछ पेनल्टी और कुछ इंसेंटिव्स दे के लोगों को इसमें लाना पड़ेगा। ये धीरे धीरे हो सकता है और इसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, जिससे कि ये लाइफस्टाइल में चेंज हो। छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे टूरिज़्म का है, टूरिज़्म में लोग बाग जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, लेकिन कितना कचरा, कितना वेस्ट वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं इस बारे में, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक इनर्शिया है या ऐसा कुछ माइंडसेट है जिसको हम चेंज नहीं कर पाते। जापान का एग्जांपल मैं भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ था कुछ दिन। लोग बाग छोटे छोटे हिलॉक्स में जाते थे, रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं, सुबेरे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, लेकिन अपने साथ जो बैग ले जाते हैं और जितना भी कचरा वो जनरेट करते हैं, चाहे वो खाली केन्स हों, चाहे वो रैपर्स हों, वो सारा की सारा उस बैग में भर के वापस लाते हैं और नीचे जाके प्रॉपरली जहाँ डिस्पोज करना चाहिए वहाँ डिस्पोज करते हैं। तो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग, इस किस्म की चीज़ जो हमें शायद बचपन से लोगों में, हमारे बच्चों में डालनी चाहिए, और अगर हम ये डालना शुरू कर दें तो ये धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी। और ये चेंज सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज का चेंज नहीं है, ये पूरा लाइफस्टाइल का चेंज है, जिस चेंज को हम डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, और वो सारे लेवल्स पे कमिटमेंट चाहिए। Right. Ms. Ruby, if I may come to you, Mr. Kumar spoke about messaging. Since morning, we've been playing visuals of how the Lok Sabha Speaker, who is chairing the P20 summit, took the metro, a public transport, to actually reach the venue, the Yasho Bhumi. We've often seen the Prime Minister do that. One good thing is that it speaks about how good our infrastructure is actually turning out to be. But the second aspect about messaging, how significant is the fact when leaders like the Prime Minister, the Lok Sabha Speaker use the public transport? How good a message is it for the common person to adapt to that kind of lifestyle which is sustainable? And just early in the morning, one of the panelists suggested that the parameter of progress of a country is not measured by how many cars on the road. It's measured on the kind of sustainable growth that you are actually delivering. Absolutely. I think I commend our Prime Minister very much and really admire his leadership, not only just in having taken the metro, but in bringing this whole mission of life into the global community. I think that is the greatest contribution we have for humanity, to bring life as a mission and making it a global mass movement is huge. And I think it's one of the key ways of how we can target climate action
and climate adaptation and mitigation. And when we talk about using public transport, reducing the use of private cars, that would actually contribute to climate change and pollution, and especially in Delhi, we know that it's a huge issue. I think the example set lead by example, leaders leading by example actually is one of the biggest ways that would actually create a mass movement for the general people to follow. And having said that, I would also like to highlight, I'm just deviating a little bit, that what we don't realize is when we talk about lifestyle and the environment, the health is such an important you mentioned about the growth and development of the country, but the growth and development of the country is not just measured by economic growth, but by the health. Absolutely. Health is very important. And the health is grossly affected, not just human health, animal health, and plant. And it is that integrated interspecies health that is crucial for actually climate adaptation. And that's why One Health has become an important agenda by the World Health Organization. It's an important agenda in the G20 India presidency declaration, as well as India's mission towards health and climate action through the One Health approach. Shelly ji, can we say then that the life movement that has been started by India provides the perfect roadmap to ensure that no country has to choose between fighting poverty and fighting against climate change? Yes, absolutely. I mean, life has to be a bridge between development and climate action. We have to be very mindful that, you know, when we talk about developing countries, India itself, which has taken a leadership on this norm on life, our per capita emissions, for instance, are very low. And, you know, the normal trajectory and paradigm of other countries have been that as you develop, as, you know, you develop in terms of human development, you know, the per capita emissions rise. However, India is saying that, you know, there can be a different trajectory if we are mindful of our utilization without really compromising on the fact that, you know, that our living standards are not compromised and basic needs are not compromised, and the capabilities approach of human well-being is taken care of. Right. शैली, लेकिन ये तो लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि हम आज जिसकी बात कर रहे हैं ये अपने आप में एक मूवमेंट है जिसे कि भारत जो है वो चला रहा है. अगर मैं बात करती हूँ कि इसे समझना होगा, जैसे अगर ईरान की बात करें तो अभी देखिए हिजाब को रिजेक्ट किया जा रहा है, ईरान में एक मूवमेंट चलाया जा रहा है. उसी तरीके से हमने इस मूवमेंट को शुरुआत किया है. कोरोना पीरियड की बात करें, बहुत ही बुरा वक्त हमने देखा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात लगी जब सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं थी और एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला. तो मैं फिर से कहूँगी कि कैसे लोगों तक इस बात को समझाया जाए, कैसे पहुँचाया जाए और क्या तरीके हो सकते हैं. जैसे कि आशीष ने कहा कि हमें कुछ पेनल्टी, मतलब कुछ ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि बाकी देशों में तो ये कल्चर है, बट वाई नॉट इन इंडिया. डेफिनेटली जब हम बात करते हैं जीवन शैली के बदलाव की, तो सबसे पहला चीज़, जैसे आशीष जी ने भी बोला और रूबी जी ने भी बोला, सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस और एजुकेशन. और हम जब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हमें सोशल इंस्ट्रूमेंट्स जो अवेयरनेस वगैरह फैलाता है, उसके अलावा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की भी बहुत ज़रूरत है. तो पेनल्टी वगैरह की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि जैसे इंडिया में है पेनल्टी, बट यही है कि और दूसरे देशों में भी है, तो उसको स्ट्रिक्टली कैसे इन्फोर्स किया जाए, और उसकी बहुत आवश्यकता है. बट उससे भी ज़्यादा यही आवश्यकता है कि वो अवेयरनेस, और वो बहुत ज़रूरी है. और मैं इस बात पे ही ये बात करना चाहूँगी कि इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म लॉन्च किया है which seeks to incentivize individual behaviors. बहुत डिटेल में इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे शैली. लेकिन भारत को लोकतंत्र की देखिए जननी कहा जाता है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने सबको राह दिखाने का काम किया है. दिल्ली में चल रहे P20 के प्री सेशन में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इसमें. ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल दुआरते पशेको प्रेसिडेंट IPU, Honorable Presiding Officers of Parliaments of G20 countries, Honorable Members of Parliament of G20 countries, G20 Sherpa Sri Amitabh Kant ji, Secretary Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Government of India, Srimati Leena Nandanji. Distinguished participants and guests, Namaste. We have come to the conclusion of an engaging discussion on the idea of lifestyle for environment. It was my privilege to be part of the interactions that began with the wise words of Sri Om Birlaji, Honorable Speaker Lok Sabha. His words highlighted the need for environmentally conscious lifestyles in the wake of climate change. I thank all the distinguished presiding officers who spoke for their valuable insights and adding unique perspectives on this subject. I also thank Mr. Amitabh Kant, the Sherpa G20, for introducing the topic of today's discussion and putting it in right perspective. I would also like to extend my appreciation to Mrs. Leena Nandan, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for her interesting presentation on life and the short film, which showcased that climate action will have to be taken up with greater urgency by the parliaments, governments, business, civil society, and by the citizens. Excellencies, the concept of lifestyle for the environment was first introduced by India at COP26 in Glasgow in 2021, calling upon the global community to make life an international mass movement towards, I quote, mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption, unquote, of our natural resources. Allow me to remind, Excellencies, that this is exactly what our father of nation, Mahatma Gandhi, had warned us a long time ago through his famous words, and I quote Mahatma Gandhi, the earth has enough resources for our need, but not for our greed. These words ring true today where we find the world battling with the adverse implications of the climate change and environmental degradation. Excellencies, Mission Life seeks to channel the efforts of individuals and communities into a global mass movement of positive behavioral change. Mission Life is a very significant step in our long journey of sustainable living. India, under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made concerted efforts to combat the ill effects of climate change. In his words, I quote, Mission Life connects the powers of the people for the protection of this earth and teaches them to utilize it in a better way. Mission Life makes the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute according to his or her capacity. Mission Life believes that even small efforts can have a huge impact. Mission Life inspires us to do all that can be done in our everyday life to protect environment. Mission Life believes that the environment can be protected by changing our lifestyle, unquote. Excellencies, collectively and individually, therefore, we need to be mindful of the fact that every small action counts and every individual matters in our fight against the challenges of the climate change. The Life Initiative is not confined to the boundaries of any one nation. It's a global movement, reminding us that the fate of our planet is inseparably linked to the choices we make every day. Let us be the guardians of our environment and the torchbearers of a sustainable legacy and regenerative future. Together we can turn the tide towards a world where life thrives and our planet flourishes. Excellencies, while the executive has its task cut out for combating climate change, the role of Parliament is also central to any successful strategy to tackle it. The G20 Parliamentary Forum, uniting representatives from different parliaments, holds immense potential to deepen parliamentary cooperation to address this global issue. Together, we can shape legislative frameworks that support climate mitigation and adaptation, ensuring that our nation are on the path of a sustainable future. As Honorable Speaker Lok Sabha has already said, before Indian Parliament, through both houses, has been at the forefront of articulating the climate change concerns and also examining the shaping of energy transition, energy security, and environment-friendly technology.
Excellencies, in this session, I am genuinely pleased that we as representatives of respective parliaments could harness our collective wisdom to generate innovative ideas and strategies. Almost 15 speakers have articulated on this subject in this session. The President of IPU, Honorable Duarte Pacheco, underlined that Parliament must also focus on administrative reforms towards sustainable practices. Honorable speakers have highlighted unique ideas from their respective countries in protecting and preserving the environment. These include legislative protections, identifying the right balance of regulatory framework, protection to indigenous communities, changes in our education at primary level, among others. While the ideas expressed by speakers were distinct to their respective regions, these ideas firmly display the common resolve to preserve our environment through behavioral changes at an individual and community level. Excellencies, your valuable views and constructive suggestions given today will certainly go a long way to give a boost to the global movements of sustainable lifestyles and sustainable ecosystems. We also discussed and shared knowledge about individual and community level actions and global best practices that could help combat climate change. At the end, I would like to reiterate my sincere gratitude to each of you. I thank you for your enthusiastic participation and constructive approach shown here. Jai Hind, thank you very much. Namaskar. तो बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से माइंडफुल बने, तभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संभव हो सकती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने P20 से पहले जब समिट हुआ था तो उन्होंने अपने रिमार्क्स में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मैं आप सबका लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में आप सब प्रतिनिधि भारत की यात्रा पे आए। भारत जो विविधता, बहुलता, विविध संस्कृति वाला देश है, मुझे लगता है इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको ये समिट नए मापदंडों को नई दिशा देने में कामयाब होगी। आज हम पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल संबंधित प्री बैठक में भाग ले रहे हैं। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है और आज प्री समिट में इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय प्रतिनिधियों का अमूल्य योगदान होगा, विचार विमर्श होगा, ऐसी मेरी आशा है। योर एक्सेलेंसीज, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। प्रकृति को आदर सम्मान देकर हमेशा हमने हमारे संस्कारों को इसी फलीभूत में हमने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति को इस दृष्टि से देखा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है और यही पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना भी है। बदलते परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। हम विश्व के समक्ष
उपस्थित चुनौतियों से अवगत हैं, इसलिए इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की मांग है। योर एक्सेलेंसीज, पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है। आज ये विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस विचार को आधार मानकर आज अलग अलग देशों में अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार नीतियां एवं कार्य योजना भी बनाई जा रही है। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल विषय पर भारत की संसद में भी व्यापक चर्चा हुई है। आवश्यकता होने पर कानून भी बनाए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल नीतियां एवं कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सबको अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिकता से योगदान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार 8 बिलियन वैश्विक आबादी में से यदि 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम हमारी सर्वोच्च संस्था, विधायी संस्था, संसदों में मिशन लाइफ स्टाइल विषय पर चर्चा करें, वहां की अपने अपने देश की जनता को एक संदेश दें ताकि देश की जनता अपने जीवन में हिस्सा मानकर एक जन आंदोलन के रूप में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपके विचार अमूल्य होंगे और हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपट पाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक नई दिशा दे पाएंगे। आप सब पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पधारने के लिए। So there you heard Lok Sabha Speaker Om Birla and Deputy Chairman of the Rajya Sabha Harivansh talk about the importance of Mission Life, how it's important to bring about effective change. We must promote sustainable living. We are joined by my colleague Pawan Sharma from Yashobhumi, the venue of the P20 summit and where this pre-session happened today, the Parliamentary Forum on Life. Pawan, give us a sense of the kind of deliberations that took place. We've been talking to experts about how Mission Life is important, but tell us about the kind of atmosphere that prevailed and how it gained traction among the international delegates present there. टीना, मैं इस वक्त उसी समिट हॉल में हूँ। पलाश हॉल है यहाँ पे जो यशोभूमि में है, वहाँ पे आज जो है, क्योंकि प्री समिट डे है आज, जो P20 स्पीकर समिट है वो कल से शुरू होगी 13 और 14 तारीख को, पर आज जो 12 तारीख जो है
पार्लियामेंट्री फोरम का जो पहला यहाँ पे बैठक हुई यहाँ पे, और जैसा हम सभी कह रहे हैं कि उसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पे यहाँ पे बात हुई। मेरे पीछे आप यही समिट हॉल था, यहीं पे सभी लोग बैठे थे और अभी 2 बजे से थोड़ी देर पहले ही ये जो मीटिंग थी वो संपन्न हुई है। सभी जैसा हम कह रहे हैं कि शुरुआत जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की और अंत में राज्यसभा के उपसभापति जो हरिवंश हमने सुना। फोकस वही था कि हमारी जो जीवन शैली है वो जो है पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, तो इस पे ही फोकस था। और एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं कि जो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है या जो जलवायु परिवर्तन का जो मामला है उसके कारण जो है 3 बिलियन लोगों के लिए पानी की कमी हो सकती है। अगर क्लाइमेट चेंज की स्थिति ऐसी ही रही जैसी वर्तमान में है तो जीडीपी जो है अगले ग्लोबल इकोनॉमी में जीडीपी का 18% की कमी हो जाएगी सिर्फ एनवायरनमेंट के कारण। और जैसा अभी लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि अगर हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाते हैं तो दुनिया की जो जनसंख्या है वो 8 खरब के आसपास है, तो 1 खरब लोग भी अगर जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो बिहेवियर और अपना जीवन शैली को चेंज लाएं तो जो कार्बन एमिशन है वो 20% घट जाएगा। तो ये आंकड़े हैं और ये बड़ी चिंता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा विषय है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ग्लासगो में शुरुआत की थी इसकी लाइफस्टाइल जो जीवन शैली की बात है और उसके बाद ये आगे बढ़ा। विश्व को उन्होंने बताया कि हमें पर्यावरण अनुकूल बिहेवियर करना चाहिए और उसके बाद भारत में इसके ऊपर बहुत मिशन चलाया गया, बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ है भारत में। अगर मैं आपको बताऊं तो एक सबसे बड़ी बात तो अगर हम संसद की बात करें कि जो सिंगल प्लास्टिक यूज है उस पर बैन है। पार्लियामेंट में हम सभी देखते हैं और इस समिट में हम देख रहे हैं कि जो कांच की बोतल्स है उसमें पानी दिया गया है। जो भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं, स्पीकर्स आए हैं, सभी G20 जो मेंबर्स हैं वहां से आए हैं, तो एक ये बड़ा चेंज है, सिंगल प्लास्टिक यूज को भारत में बंद कर दिया गया, बड़ी बात है। दूसरी बात कि जो प्लास्टिक का यूज हम सामान्य चाय पीने में हम करते हैं तो कुल्हड़ का प्रयोग जो है भारत में ये कई वर्षों से चल रहा है और एक चाय उत्पाद कंपनी तो ऐसी है, उन्होंने कहा कि कुल्हड़ में वो चाय देने की बात वो करते हैं कि अगर हम कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो हम देश की मिट्टी को चूमते हैं, तो ये बड़ी बात है और ये सामान्य सा बिहेवियर है। दूसरी बड़ी बात इसमें जो जीवन शैली में परिवर्तन की बात है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि जब भी घर से हम बाहर जाएं तो लाइट्स ऑफ करें। ये छोटा सा प्रयास है पर इससे एनर्जी सेव होती है। बिल्कुल पवन, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और इन्हीं प्रयासों की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। शैली, आप ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म की बात कर रही थी, हम इसको चाहेंगे कि आप आगे बढ़ाएं, हमें समझाएं कितना ज़रूरी है और कैसे इस पर भारत सरकार जो है वो काम कर रही है। हाँ, तो जुलाई इस साल भारत सरकार ने गज़ेट के थ्रू ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट गाइडलाइंस की नोटिफिकेशन की। एक तरीके से ये बहुत ही बोल्ड और एक एक्सपेरिमेंटल भी कदम है क्योंकि हम जब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की और उससे जुड़े मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, जनरली हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं, बट इंडिया बोल रहा है कि नहीं, हमें सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स नहीं ग्रीन क्रेडिट्स की बात करनी चाहिए। सिर्फ कार्बन रिड्यूस करने की बात नहीं, हम पानी क्यों ज़्यादा वेस्ट करें, हम वेस्ट क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करें, हम मैंग्रोव को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कदम है इंडिया का ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म, ये एक बोल्ड बट एक ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल कदम है मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके एक जागरूकता पैदा करने का। इस मैकेनिज्म में ये भी है कि अगर कोई कंपनी या MSME ग्रीन लेबलिंग प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो जो कंज्यूमर है जो जाके बाज़ार में सामान लेता है वो ये ग्रीन लेबल देख के उसको मतलब समझ आ सके कि वो एक चॉइस कर सकता है कि मैं ग्रीन प्रोडक्ट खरीदूं। तो ये सारे इको लेबल प्रमोट करने का भी एक तरीका है क्योंकि आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं हमें सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ग्रीन क्रेडिट्स की बात करनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंच रही है, क्या इसके लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? अभी ये नई पॉलिसी है पर हाँ, जैसे ये बात हो ही रही है कि इसमें अवेयरनेस एजुकेशन जो नेक्स्ट कदम है वो गवर्नमेंट कैसे करती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा क्योंकि इसका आइडिया ही है कि ये लोगों तक पहुंचे और इंडिविजुअल एक्शन भी इस ग्रीन क्रेडिट को अवेल कर सके। I think individual action is something where it all boils down to. Ruby ji, if I may come to you and talk about
the approach that talks about reuse, recycle. This is wherein the individual action, and especially in a country like ours with 140 crore people, if we adapt to that kind of change, it will bring about a sea of change globally towards our fight against climate change. So how do you see awareness, number one, on that area, the kind of work that needs to be done? The second aspect being on these small changes that we need to adapt in our lifestyles as individuals. Please unmute yourself. Has already been indicated in some of the parts that Shaili and also Ashok spoke. I think this has been covered partly, but I would like to highlight that there are multiple levels in which you can act. One is the policy itself, the policy talking about it, which is already there in our declaration. Second of all is actually to also introduce certain regulations that actually make people that aware that, for example, plastic pollution, which Ashok just talked about, to prevent that kind of thing, people being more responsible and not causing that and that kind of pollution in our environment, especially in the beaches and places like that, and actually try to encourage them to put that into, like there should be places where you can reusable, like in Japan, it's very, very common, reusable paper, reusable plastic, everything is disposed in a very, very organized way, and it's being followed in many other countries also. Okay. So India being also the leader of the Global South, which actually was a very great movement prior to the G20 starting in the beginning of this year under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji, that can actually influence the whole South, Global South, as a strong leader in this space. So policy, then regulations, then awareness, creating more awareness among the people, not just through educational institutes or companies, but right down to the grassroots level in the villages. The people have to realize that this is very dangerous for the future generation, that if we introduce this pollution in the air, in the water, in our foods, all these are crucial. And so that is another thing. The other thing is, of course, giving incentives, some form of incentives that by actually following that regulations, you are actually helping to live a better life, to make the world in which you're living and in which the future generations, because our life is not owned by us. Our life is owned by the future generation. They are the ones who have the right to this life that we are living. And so we have an obligation to make it a clean, safe, and safe and appropriate place for them to live. And for that, I think climate adaptation through these different methods are crucial. And one more thing I would like to say is that, for example, the companies should be given incentives to actually do like corporate responsibility, social responsibility. They should actually invest in this to try to actually help this in the public space, to make sure that there is a lot of reuse, recycle being promoted. जी रूबी, हम आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी यशोभूमि से जुड़े हुए हैं पवन। क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रीयूज रिसाइकिल की बात हो रही है, तो वही बहुत खास और जिस पर कि प्रधानमंत्री ने नजर डाला था, P3, इसे भला हम कैसे भूल सकते हैं? प्रो प्लैनेट पीपल, हम जितना प्रकृति को देंगे उससे ज्यादा प्रकृति हमें दे रही है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ने भी किया। पवन, क्या कहेंगे आप? जी प्रांजलि, जहां आज का सेशन जो यशोभूमि में हुआ है, ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में, इसी बात पे जोर था जो P3 प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें प्लेनेट को, इस धरती को बचाना है, और अगर उसको बचाना है तो सभी लोगों को, विश्व के जितने भी देश हैं, उनको पर्यावरण अनुकूल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर करना पड़ेगा, और ना सिर्फ इंडिविजुअल को बल्कि कम्युनिटीज को और कंट्रीज को, सबको अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस दिशा चलिए पवन, हम आ रहे हैं आपके पास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगभग
4200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया और सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए भी वो नजर आए। और जो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं प्रकृति की गोद में। बहुत ही सुंदर तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंच रही हैं।